So then friends, let's start with today's session. Discussion करते हैं. हमने last session में friends, if you remember in detail, we had a discussion regarding taxation of gifts under income tax law. Then we shifted towards section 50C, that if a particular person is selling immovable property for a consideration less than circle rates are also called stamp duty value or area rates. Then in that case, that particular circle rate will be deemed to be the sale consideration, and accordingly capital gains will be computed. And similarly, we have seen from the perspective of the recipient or the purchaser of the property that in case if he purchases the property for less than circle rate, then the difference will be taxable as part of income from other sources. But we discussed some exceptions where this particular section 56 to 10 is not applicable. If you are acquiring that particular asset from your relative or on the occasion of the marriage or by way of will or inheritance or contemplation of the death of the payer or the donor. Ayush is asking a particular question. If at the time of purchase we know that the builder will deliver it in 4 years, then deduction will be allowed. Ayushi, can you tell me what particular section or what particular transaction you're talking about? It seems that you have traveled to the future through the time machine. I think you're talking about section 54 or 54F. Is that so? Ayushi, I do not think so. If I'm not wrong, we have not discussed section 54 yesterday. Section 54 we discussed yesterday? I do not think so. I had plans to discuss section 54 to 54, 54 and 54F, although it was not part of that topics list shared with you through the portal. But still, it is my personal thing that we should discuss section 54 and 54F if the time permits. Ayushi must have traveled through a time machine, if I'm not wrong. फिर तो आयुषी जी को पता होगा कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे. That's really nice. Should I shift that management control to you, Ayushi, to discuss the today's session? So friends, चलते हैं 50C में एक दो particular aspects हैं that we should take care in mind. Section 50C आपको कहता है कि if you are selling that particular property below the circle rate. Let's take a small example again. That there is a property with Mr. A acquired in financial year 12-13 for rupees 5 lakh. Today, he wants to sell it. And circle rate, if I talk about, is, for example, 80 lakh rupees as on date. Now, friends, how the circle rates are being determined? I'm not talking about the procedure. Like when we talk about the circle rates are being determined, is that for a particular property, whether the government tells you the circle rate for each and every property separately, क्या हर प्रॉपर्टी का अलग अलग सर्कल रेट बताते हैं वो कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी नंबर एड्रेस नंबर 101 है, इसका इतना रहेगा, 102 का इतना रहेगा, 103 का इतना रहेगा. इज दैट सो? और सर्कल रेट्स आर नोटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर कॉलोनी एरिया वाइज कि इस एरिया में पर स्क्वायर मीटर वट एवर द मेजरिंग यूनिट इज देयर, पर स्क्वायर यार्ड और पर स्क्वायर फीट वट एवर, कि उस एरिया के अंदर पर स्क्वायर मीटर का ये सर्कल रेट रहेगा. व्हाट डू यू से फ्रेंड्स? आपका क्या कहना है? Is that for each and every individual property notified by the state government separately? Okay, we are receiving the answers. Ruchika is saying that, okay, it is for a particular colony. Katiravansh is also saying that it is on area wise. Yes, it is, friends. Like friends, if I talk about Delhi, the state government for the purpose of circle rate has divided the Delhi into total 8 categories, category A to H. And for every category, they have notified the circle rate in terms of per square meter.
Now you have to check out the square meter land area, and accordingly you have to multiply that particular circle rate. Then there is a circle rate for the construction. So whatever the construction is there on your property, you have to multiply to that, and the total is called circle rate. But if we talk about a particular area, a particular colony, क्या वहां पर हर प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर मीटर प्रैक्टिकली वैल्यू सेम होगी? क्या सिर्फ प्रैक्टिकली मार्केट वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो उस पर्टिकुलर कॉलोनी में सिचुएटेड है? नो फ्रेंड्स, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। पार्क फेसिंग है या नहीं है, दैट मैटर्स। मेन रोड पे है, इंटरनल रोड्स पे है, आगे रोड कितनी चौड़ी है, और फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, मल्टीपल। साइज क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे बिलीफ्स होते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट बिलीफ इन आवर दैट फैमिलीज, दो तरीके के प्लॉट्स बोले जाते हैं, गोमुख और शेरमुख। गोमुख मीन्स लाइक इट्स समथिंग लाइक फील लाइक अ काउ फेस, एंड शेरमुख लॉयंस फेस। तो गोमुख होता है दैट सीम्स फील्स टू बी बेटर, शेरमुख होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता, शेरमुखा इट सीम्स टू बी गुड फॉर द कमर्शियल। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और लोगों को पता चलता है कि बराबर वाले प्लॉट में, बराबर वाली प्रॉपर्टी में, द नेबर इज नन अदर देन बट द अ काइंड ऑफ डॉन। अब क्या कोई मेरी प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल। तो practically value, if we talk about, is not necessarily on the basis of the colony. It is a cumulative factor of various factors. अब प्रैक्टिकली अगर उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 80 लाख से ज्यादा है, then there is no problem. Like for example, market value is rupees 1 CR और मैं 1 करोड़ में बेच रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 1 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ में टैक्स लगेगा। बट अगर मार्केट वैल्यू उसकी 80 लाख से कम है और जेन्युइनली कम है, then 50C and 56 to 10 are creating problems. अभी सर्कल रेट 80 लाख रुपए, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी 80 लाख पे चार्ज करनी है, और मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 70 लाख रुपीस। अब क्या करें? हाउ टू सेल? बेचूंगा फिर भी टैक्स लग रहा है, खरीदने वाले पे भी टैक्स लग रहा है। Then friends, for that purpose the government has provided several relaxations under section 50C, and similar relaxations are provided as part of 56 to 10. First relaxation: if you believe that fair market value of the property is less than 80 lakhs, you can raise this particular challenge with assessing officer. And if the assessing officer believes कि आपका challenge सही नहीं है, he has to refer this particular case to the valuation officers. Friends, valuation officer are also part of income tax department, और वैल्यूएशन ऑफिसर आपसे डिटेल्स डिमांड करेगा, प्रॉपर्टी के कागज देखेगा, उसके बेसिस पे वो वैल्यूएशन करेगा कि मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एंड इफ द वैल्यूएशन ऑफिसर सेज दैट मार्केट वैल्यू इज 70 लाख, then section 50C and 56 to 10 will apply on the basis of 70 lakh. अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया 60 लाख, तो फिर 60 लाख के बेसिस पे चेक करेंगे कि आपने 60 लाख से कम में बेची है, ज्यादा में बेची है, एंड अकॉर्डिंगली योर सेल्स कंसिडरेशन विल बी डिसाइडेड। तो पहला तरीका तो आपके पास क्या है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू चैलेंज कर सकते हो, बट फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, दैट मे लेड टू द डिस्प्यूट्स। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा एक पर्टिकुलर कॉलोनी में वेरिएशन इज पॉसिबल। क्या कहा कि 10% तक का वेरिएशन हम टॉलरेट कर लेंगे। 10% तक का वेरिएशन हम टॉलरेट कर लेंगे। हाउ द 10% is to be calculated? Now, for example, my actual sale consideration is 70 lakh. गवर्नमेंट ने कहा अगर सर्कल रेट मैक्सिमम डिफरेंस इसके 10% तक है, तो हम सेक्शन 50C एंड 56 to 10 अप्लाई नहीं करेंगे। दैट मींस इफ सर्कल रेट इज अप टू 77 लाख, मैंने 10% किसका निकाला? 70 लाख का। तो इफ सर्कल रेट इज अप टू 77 लाख और लेस,
then section 50C and section 56 to 10 will not apply. You have to calculate capital gains on the basis of 70 lakhs only. But if circle rate, for example, is 78 lakh, then in that case, your sales consideration will be treated as 78 lakh and accordingly capital gains will be calculated. Again, that means this 10% relaxation is not kind of exemption, is a condition. As soon as your difference between actual sale consideration and circle rate is more than 10%, then you are supposed to pay tax on whole of the difference. फ्रेंड्स यहां पर ये नहीं होगा कि 1 लाख के डिफरेंस पे टैक्स लगेगा. दिस होल 8 lakh gets taxable. So as soon as the difference between the actual sale consideration and circle rate is more than 10% and 10% of which particular amount actual sale consideration, then whole of the difference gets taxable, and similar provision is for the in the hands of the buyer. बायर के हाथ में भी अगर सर्कल रेट 77 लाख तक है तो अदर सोर्सेज में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा. But if circle rate is 78 lakh, then this particular difference of 8 lakh will be taxable in the hands of the buyer under head income from other sources, section 56 to 10. Is that clear, friends? This particular relaxation, 10% variation. अब होता क्या है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली व्हाट द पीपल डू, ये ध्यान रखना. आई हैव नोटिस बहुत सारे केसेस मेरे पास इस तरीके के आते हैं जहां पर कहते हैं जी हमने तो ये करा, इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी बेच दी. अब देखिए जब क्या होता है, assessee जो होता है whenever he is going to sell the property does not ask the his professional who is looking after the income tax matters that I am going to sell this property for this particular amount, this is circle rate, any issues with the income tax law. He comes later on at the time of filing of return and provides all the data. और हम देख के ना सिर पीट लेते हैं, हम कहते हैं ये क्या किया. Now what happens? Friend, that is a wrong trend. Why we want to save the taxes? फ्रेंड्स जेन्युइन टैक्सेस पे करने चाहिए. होता क्या है ना, फॉर एग्जांपल फेयर मार्केट वैल्यू इज 2 CR, सर्कल रेट 1.2 CR. वी ऑल नो व्हाट द पीपल डू. फ्रेंड्स अब अगर कोई सेल करेगा 2 करोड़ रुपए में तो अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन्स विल बी कैलकुलेटेड. वो कहते हैं नहीं जी हमें तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना, कम से कम देना है. तो उस पर्पज से लोग क्या करते हैं, जो बुक्स के अंदर सेल होती है वो सर्कल रेट के बेसिस पे करते हैं कंसिडरिंग सेक्शन 50C. बाकी आपको पता है किस तरीके से सेटल होता है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. एंड सिंस लास्ट 5 to 7 years इफ आई टॉक आउट, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. Sir, in some cases, special area like transport zone, the value differs. In that case, there is a huge difference in the circle rate and market. In that case, what is the solution? Katiravan is asking, there may be a special cases where there is a huge difference in the circle rate and the market rate, then what to do in that particular case? In that particular case, only the solution is that you obtain valuation report from the registered valuers who are the professional valuers having registration from the income tax department, to get the fair market value valuation from them. And in case income tax department goes for scrutiny assessment, you produce that particular valuation report, and the assessing officer may refer your case to the valuation officer, and valuation officer will recompute the market value and accordingly taxation will be decided. In case the assessing officers and the valuation officer does not agree with you, you can file appeal with the CIT appeals. So that is the only solution, there is no other solution. Now what they do, that in the case of the books, they record the sales on the basis of the circle rate, and the difference they charge in cash. Friends, that is highly risky and not advisable, because in cash, if the department comes to know that you have charged 80 lakh rupees difference or whatever the difference in cash, then friends, what will happen? They will increase your sales consideration to 2 crore, and accordingly you have to pay to the capital gain tax. On that tax, there will be interest and penalty. And further, since you have accepted more than 20,000 in cash for the sale of property,
will also be liable for the penalty by virtue of section 269 double S read with section 271D. It is not at all advisable, but the people are doing, they are saying that 10% relaxation is allowed. That we will also take off. मतलब 1 रुपया भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चला जाए, वो क्या करते हैं, इसमें से 10% कम करते हैं, लेस 10% इज इक्वल टू 12 लाख रुपीस. डिफरेंस आ गया कितना, 1.08 CR, और सेल डीड इतने रुपए में रजिस्टर करते हैं. फ्रेंड्स, द बायर आल्सो एग्रीज बिकॉज ही इज सेविंग द स्टैम्प ड्यूटी. Because if he buys the property for the 2 CR, he need to pay stamp duty on 2 CR. But if he buying the property for 1.2 CR or 1.08 CR, he need to pay tax on stamp duty on this particular sale consideration. Now, friends, can you tell me, is there any problem in that by virtue of section 50C? उसने सर्कल रेट में से 10% कम किया, 12 लाख रुपीस, और कहा जी सेल डीड कितने रुपए की, 1.08 CR. Now it's a very simple mathematics. Friends, as per law, relaxation 10% का है, no doubt, but 10% of which particular amount? Law does not say that if you are selling the property 10% less than the circle rate. It says if the circle rate does not exceed 10% of the actual sale consideration, then section 50C will not apply. फ्रेंड्स, 10% अगर आपने एक्चुअल सेल 1.08 CR की है, तो इसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा, एंड दैट विल बी 10,80,000. ये इसको ऐड करोगे तो दैट कम्स टू 1 करोड़, ये कितना हुआ, 8 लाख, 18,80,000. नाउ सर्कल रेट इज 1.2 CR, 1 करोड़ 20 लाख. क्या जो सेक्शन 50C में रिलैक्सेशन दिया है, क्या मैं उसमें कवर अप होता हूं? नो. वेरिएशन इज मोर देन 10%, फ्रेंड्स सेक्शन 50C अप्लाई हो जाएगा, एंड कैपिटल गेन्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रुपीज 1.2 CR. तो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी क्लियर विद द लॉ कि लॉ किस चीज पे फोकस कर रहा है, 10% किस चीज का कैलकुलेट करना है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. फ्रेंड्स, ये प्रोविजन 50C में भी है और आपका 56(2)(10) में भी है. Can we proceed with another relaxation? Now, for example, I book a flat with a builder in financial year 2017-18. फ्लैट की बुकिंग हुई 80 लाख रुपीस, और उस समय सर्कल रेट प्रिवेल कर रहा था 70 लाख. पॉसिबल है. नाउ ये रेडी हुआ, रेडी के बाद पोजेशन मिला, और पोजेशन के साथ क्या हुई, रजिस्ट्री. दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 22-23. उस समय सर्कल रेट कितना, मान लो ये सर्कल रेट बढ़ के हो गया 1 CR. Now what will happen? When I booked that particular flat, at that time circle rate was 70 lakh, and I booked the flat for 80 lakh rupees, but I got the possession plus registry in financial year 22-23, on which particular date registry circle rate is 1 CR. Friends, यहां पर अगर जो स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होगी as per state government laws, that will be on 1 CR. स्टेट गवर्नमेंट का तो सिंपल सा नियम है, जिस दिन रजिस्ट्री कराने आओगे, द डे ऑन व्हिच यू आर कमिंग फॉर द रजिस्ट्री, ऑन दैट डेट सर्कल रेट्स विल बी अप्लाइड एंड अकॉर्डिंगली स्टैंप ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड. द स्टैंप ड्यूटी इन एनी केस नीड टू बी पेड ऑन 1 CR. डू हैव टू पे बिल्डर rupees 1 CR? No. Friends, my contract, my booking is for 80 lakhs. I need to pay in total 80 lakh to the builder and not more than that. Now, whether in that particular case, section 50C or 56(2)(10) will apply, that is the question. Friends, this same relaxation is provided in section 50C, section 56(2)(10), that in case there was an agreement for selling this particular property with a condition, क्या होना चाहिए, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस you must have paid some consideration, a part consideration
on or before date of agreement by account pay check, draft और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आपने एग्रीमेंट किया था प्लस आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दी थी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इन दैट पर्टिकुलर केस the circle rate prevailing on the date of booking, date of agreement will apply, and circle rate as on date of possession or registry will not apply. And I think that is very genuine one, because friends, the market value changes over the time. जब मैंने बुक किया था तो उसी समय का मार्केट वैल्यू लगेगा ना. So that is another relaxation provided. So if you are going to have a flat booking with a builder space, generally in that particular case, it is highly advisable that you make some payment on or before the date of booking with the builder by account pay check, draft or electronic clearing system, so that at the time of registry, if the circle rate increases, still you will not be liable to tax under income tax law on account of that. Is that clear, friends? This particular relaxation. चलते हैं आगे. अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, सक्सेशन प्लानिंग. इफ यू रिमेंबर, देयर वाज स्मॉल रेफरेंस यस्टरडे आल्सो रिगार्डिंग हिंदू लॉ, कि उसमें लेवल 1 लीगल हेयर्स कौन से हैं, लेवल 2 कौन से हैं फ्रेंड्स. उसमें थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे एसेट्स जाएंगे. फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो सक्सेशन प्लानिंग की कहां जरूरत पड़ती है. As on date, if I talk about, there is no inheritance tax in India. But still discussion goes on every time of when the budget date is nearby, that by this budget the inheritance tax may be introduced in India. Friends, if I talk about America, what I've heard, I'm not 100% sure, that in America there is an inheritance tax of 50%. 50%. Friends, inheritance, when we talk about in terms of tax, it includes both by way of will or by way of inheritance, what we discussed yesterday. 50% inheritance tax means a lot. And friends, as a part of tax planning, I think because of that particular tax planning also, the similar provisions are provided under income tax law. Although in India there is no inheritance tax, but the people do. Like for example, Mr. A having assets of approximate having value of 500 CR. Now he simply have a view that in case he dies, whatever the estates will be devolved upon his legal heirs. That may include Mrs. A, A1, A2, his children, and they would need to pay 50% inheritance tax. Now, how to avoid that? The word avoidance is wrong. How to plan that inheritance tax is not applicable. Friends, Mr. A creates a trust, private trust, in which he settles, transfers all his property and makes beneficiary Mrs. A, A1 and A2. Now, for all the purposes, legal owner is this particular private trust. And friends, trust is the artificial person which have existence till immortal time. रहेगी हमेशा existence, no problem at all. बेनिफिशियरीज कौन होंगे? मिसिज ए, A1, A2, और वो चाहे तो आगे और किसी को भी बेनिफिशियरी अपॉइंट कर सकते हैं. एंड ऑन दैट बेसिस द ट्रस्ट डीड इज दैट ड्राफ्टेड, so that the benefit continuously flows to Mrs. A, A1, A2 and आगे future generations. Now, whatever the tax is required to be paid on the earnings of rupees this particular 500 CR need to be paid by the private trust, and whatever the profit is there, that can be distributed to Mrs. A, A1 and A2. If they want to sell out, that private trust can sell out that property. Whatever the resulting capital gains will be there, trust need to pay the tax. And friends, even on private trust, if I talk about, tax rate is possible on the basis of slab rates.
but that does not make any huge difference. Reason being, Mrs. A1, A2 might be having personal income, and 30% tax may be there. Even if 30% tax is required to be paid by the trust, the similar tax rate is there. So friends, that is the way by which succession planning is made. That is, there is no inheritance tax. If any person whose children are getting settled in USA, they generally go for this kind of creation of private trust and settle each and every property in that particular trust. In income tax law, friends, provisions are provided. Yesterday we discussed 56(2)(10). उसमें कुछ exceptions दी हुई थी. That we discussed, friends, provided that this clause shall not apply to any sum of money or any property received from an individual by a trust. If a trust receives from an individual any money or property, that will not be taxable under section 56(2)(10) or established solely for the benefit of the relative of the individual. From the relative of the for the benefit of the relative of the individual. If I am transferring my all assets to the trust for the benefit of my relatives, and relative definition will be seen as what we have seen yesterday, friends, then in that case nothing will be applicable under section 56(2)(10). ट्रस्ट के हाथ में गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा. The benefit of relative may be a single relative, may be multiple relatives. Friends, in that basis that all assets can be transferred. Friends, if I talk about Delhi, if I want to transfer my immovable property to my child by way of gift, friends, on the circle rate we need to pay stamp duty. अब वो चाइल्ड आगे फर्दर चाइल्ड को देगा अगेन स्टैम्प ड्यूटी. इससे बेटर है कि ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दो. दैट इज अ वन टाइम ट्रांसफर, वन टाइम स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, आगे फ्यूचर में स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. If beneficiaries keep on changing, there is no requirement to pay any stamp duty to the state government at all. The huge kind of tax savings are possible. So friends, that's all in relation to the topic taxation of gift. Succession planning, section 50C, section 56(2)(10). There is small section 43CA. Let me give you the brief. Friends, section 50C is applicable only when you are selling immovable property which is held by you as capital asset. If you are holding immovable property as stock in trade, then section 50C is not applicable. In that case, section 43CA is applicable. Except for this difference, section 43CA and section 50C are same. 43CA is applicable for real estate businessmen, and section 50C is applicable for all persons who are holding the property not as stock in trade but as fixed assets or as capital asset. That's the only difference. So that's all for friends in regarding this particular topic. 50C we have discussed, 43CA I have told you in brief. 50CA, okay, I'm ignoring that particular. 11U UA, that provides how to calculate the market value of the assets. Provisions are there. Okay, that's all. Friends, do you want this particular file? Taxation of gift. A compilation of all the relevant sections and provisions at the one place. Friends, the biggest problem of the laws like income tax law is that when you are talking about a particular transaction, you have to give suggestion, you have to go for tax planning. It's very difficult to find out which provisions we need to check out. Out of something like 600 sections, then several rules are there. How to find out that which particular sections I need to look into? क्या हर ट्रांजैक्शन के लिए मैं 600 के 600 सेक्शंस पढ़ूंगा? It is not possible. And for that purpose, friends, you have to go by the index again and again. The shared with you in the first session itself. Friends, index के through ही आपका दिमाग hit करेगा कि नहीं, this provision is also there. इससे related कुछ है, इससे related कुछ है. That is more than enough. क्योंकि if you are able to find out that for this particular transaction I need to go for a combined reading of these 6 sections only, तो friends आप वो 6 sections पढ़ लोगे, research कर लोगे, but ये 6 ही पढ़ने हैं, that is the big issue.
चलते हैं जी आगे। अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Why it is interesting? Friends, if any amount is deemed under section 68 to 69D as unexplained incomes, अगर कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट आपका अनएक्सप्लेन ट्रीट कर लिया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 68 टू 69D, फ्रेंड्स, ऑन दैट पर्टिकुलर अनएक्सप्लेन्ड इनकम you need to pay tax. As on date I'm talking about 78% tax. Friends, that's a very huge tax rate, 78%. Because of this high rate of tax, we should know when a particular receipt or a particular amount can be treated as unexplained income. Friends, in absence of proper documentation with us, in absence of proper information with us, it may be possible that the income tax department held that this particular receipt is nothing but your unexplained income and may ask you to pay 78% tax. Friend, this is only the tax amount. I'm not talking about interest or penalties, that is altogether separate. So friends, there are total 6 sections: 68, 69, 69 capital A, 69 capital B, 69 capital C, 69 capital D. Friends, practically this is not relevant if I talk about that talks about Hyundai. And in my experience or life, I've never seen that Hyundai concept is prevailing in any area. Now what all these 5 sections says, देखते हैं. Cash credits. Friends, although the section uses the word cash, but in section heading is cash, but in the section nowhere they have used the word cash. So whenever there is an ambiguity between the main provision and the section heading, then the main provision prevails. So friends, do not get confused with the word cash at all. Where any sum, they have used the word sum, and some word is much wider than the word cash. You may have received that particular amount by way of check, banking channels, but still it may be covered up by section 68. Where any sum is found credited in the books of an assessee maintained for any previous year, and the assessee offers no explanation about the nature and source thereof. आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट हुआ है. बेस्ट एग्जांपल, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम समवन, that amount is credited in your books. How it is credited? You are saying that it is payable to Mr. X. It is payable to Mr. X. And you offers no explanation about the nature and source. आप उसके nature और source का कोई भी explanation offer नहीं करते. Or the explanation offered by him is, in the opinion of the assessing officer, not satisfactory. या फिर assessing officer की opinion में ये explanation satisfactory नहीं है. Like for example, the assessing officer is asking from whom you have received this particular 2 crore of rupees. You are saying nothing. So that is no explanation. But okay, you are giving explanation that it is received from Mr. X. He's staying in, I think, Agra. In Agra, I have no idea. He is a man of reputed and all sort of examples I am giving. So is that a satisfactory explanation? No. Now, friends, in that particular cases, what will happen? The sum so credited may be charged to income tax as income of the assessee of that previous year. In that case, that particular credit in your books of accounts may be treated as income of that particular previous year. Or friends, अगर section 68 में वो amount income treat कर लिया गया, you will be liable to pay 78% tax. So friends, whenever you receive money in your bank, you must have some documents to substantiate that particular receipt. फ्रेंड्स, लॉ में अगर देखोगे तो यहां पर कहीं नहीं लिखा दैट एनी सम इज क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ लोन और सम कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन. इट कुड बी एनी ट्रांजैक्शन. सेक्शन 68 इज वेरी वाइड एंड यू नीड टू एस्टैब्लिश कि आपके पास ये पैसा कहां से आया.
इसमें इन्होंने कंपनी के लिए क्या किया फ्रेंड्स, देयर यूज्ड टू बी सम काइंड ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, जिसको रोकने के लिए प्रोविजन बनाया गया। फ्रेंड्स कंपनी क्या करती थी, शेयर इशू करती थी, ₹10 शेयर, 10 पर शेयर, issue for maybe for 10 per share or maybe for 100 per share, could be anything। फ्रेंड्स जो गलत काम करते थे वो क्या करते थे, यूज टू विजिट द स्लम एरियाज, और वहां पर उनसे कहते थे यू प्रोवाइड योर पैन, पैन नहीं है तो हमें फोटो दे दो, आईडी कार्ड दे दो, यूज टू आस्क दिस डॉक्यूमेंट्स। उसके बेसिस पे एक तो वो पैन अप्लाई करते थे प्लस बैंक अकाउंट ओपन करते थे। नाउ दे यूज टू डिपॉजिट कैश, फॉर एग्जांपल 2 लाख इन दिस बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट से पेमेंट करते थे कंपनी को। Friends, although that particular slum areas people have no idea of what were they going to do with their PAN or photo or ID card, they used to give them some kind of uh, लालच, जिसको कहते हैं, ब्राइब तो नहीं कहूंगा, ब्राइब तो फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब उनको कहते थे यू टेक दिस पर्टिकुलर 5,000 रुपीज, आप हमें ये सारे कागज दे दो 2,000। फ्रेंड्स स्लम एरियाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे यूज्ड टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स। पेमेंट करते थे एज शेयर कैपिटल और मे बी एज सिक्योरिटीज प्रीमियम or maybe as share application money। फ्रेंड शेयर कैपिटल इशू करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम मिले, शेयर एप्लीकेशन मनी मिले, दैट इज नॉट रिसीट विच इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो कंपनी क्या करती थी, 2-2 लाख रुपए के शेयर्स इशू करती थी, फॉर एग्जांपल टू 100 पर्संस। अब 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to 2 CR। Now, when the company is asked that from whom you have received this particular share issue, kindly provide us the details. Friend, this amount is also covered by Section 68. Now, they used to provide this particular PAN card, their bank statement, and all sort of things. Is the company is required to check whether in the bank account cash is deposited or not? No, this is not the concern of the company. So, because the company used to provide each and everything regarding the explanation. And friends, obviously this explanation is satisfactory from the perspective of the company, that from whom they have received the nature and source of the amount they have received. अब फ्रेंड्स ये 2-2 लाख रुपए मिले हैं तो इट इज इजी टू कैच देम दिस पर्टिकुलर स्लम एरिया पर्संस? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और 2-2 लाख रुपए के लिए डिपार्टमेंट परस्यू करेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फॉर दैट पर्पस दे प्रोवाइडेड अ पर्टिकुलर प्रोविजो इन सेक्शन 68। What it is written? Provided that where the assessee is a company, not being a company in which public are substantially interested, तो basically listed companies को यहाँ पर exclude कर दिया। And the sum so credited consist of share application money, share capital, share premium, or any such amount by whatever name called. Any explanation offered by such assessee company shall be deemed to be not satisfactory unless. Now, in case of company, there are two conditions required to be fulfilled. And for which particular amount, share capital, share premium, or share application money, the person being a resident in whose name such credit is recorded in the books of such company also offers an explanation about the nature and source of sum so credited, and such explanation in the opinion of the AO aforesaid has been found to be satisfactory. That means जिसके पैसे बुक्स में क्रेडिट हुए हैं, that particular slum person also offers an explanation regarding the nature and source of the receipt by him. If only that particular slum person provides the nature and source of this rupees 2 lakh, then only company's explanation will be treated as satisfactory. Now friends, department issues notices to the these PAN numbers. वो notice issue करते हैं इन PAN number के ऊपर under section 133(6). They make inquiries from them that from which particular source you have received rupees 2 lakh. अगर satisfactory response आ गया, that is good enough. If there is no response or not satisfactory response, in that company will be held liable. This particular share capital will be treated as unexplained income under section 68. So in case of company, in case of share capital and related amounts, dual level satisfaction must be given to the assessing officer.
Is that clear, friends? Friends, by Finance Bill 2022, an amendment is proposed in Section 68. अभी क्या है? For company, उसमें भी share capital related पैसा, dual level. For other assessees or other nature of receipts, the explanation is provided to at the single level. Now, with effect from 1st of April 2022, in case any assessee receives any loan or advance, friends, same dual level satisfaction must be provided. That means, friends, अब अगर आप लोन लेते हैं, whether for the purpose of the business or for personal purposes, you may have to provide information at two levels. First of all, आपके पास पैसा किससे आया, the nature and source thereof, and that particular lender who has given funds to you, from whom that particular lender has received the funds, along with nature and source. That may, friends, have negative impacts also in the market, that private lendings may be restricted because of this particular provision. Friends, I am having trust upon you and I'm taking loan of rupees 10 lakh from you, but I have no idea from whom you have received this particular 10 lakh, and obviously you are not going to share these details with me. Now, it is quite possible when the assessing officers ask such information from you under section 133(6), that from whom you have received this particular loan amount, it may be possible our relations may not be so strong in future as compared to today. In that case, if you does not offer the proper explanations, friends, I am going to suffer. That 10 lakh will become my unexplained income. So friend, this particular section 68 is in respect of unexplained sum of money. Now unexplained investments, where in the financial year immediately preceding the assessment year, the assessee has made investments which are not recorded in the books of account. आपने कोई investments करी जो कि books of accounts में recorded नहीं है. Investment may be in the form of immovable property or maybe in the form of shares, if any maintained by him, and if any for source of income, and the assessee offers no explanation about the nature and source of the investment, or the explanation offered by him is not in the opinion of the AO satisfactory. If you have made the investments in immovable property or in shares, and the department asks that for acquiring the immovable property or shares you have made the payment of funds, what is the source of that particular payment? If you are not able to explain, that particular investment value will be treated as your income. Unexplained money etc. फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट वर्ड में मेरे ख्याल से क्या आएगा वहां पर? शेयर्स, इमल प्रॉपर्टी. वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी. रेड हुई, नकद पैसा मिला, लाइक कानपुर रेड इफ आई टॉक अबाउट द रिसेंट वन, इन विच देयर वर अप्रॉक्सीमेट 200 CR नकद, लिक्विड मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल. And such money, bullion, jewelry or other valuable article is not recorded in the books of accounts if any maintained by him. और आपके वो books of accounts में recorded नहीं है और आप कोई explanation provide नहीं करते, in that particular case the money and the value of the bullion, jewelry, valuable article may be treated as your unexplained. Now friends, if I talk about section 69 and 69A, that lays stress on what particular aspect? Not recorded in books of account. Now the department received one particular objection. Friends, a particular person acquired shares for rupees 1 CR, having worth of 1 rupees 1 CR, acquired shares of rupees 1 CR. And he made rupees 5 lakh payment by check and 95 lakh in cash, and recorded such shares in books of accounts for rupees 5 lakh. अब 5 लाख चेक से दिए, बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए. Now regarding the balance 95 lakh, the department asked him what is the nature and source, and he said that I have no explanation regarding the nature and source. Department said that we are going to treat this 95 lakh as your unexplained income. That person asked in which particular section? The department said there are two sections, section 69 or 69A, depends it is an investment or a money, bullion, jewelry, etc.
He said that there is one condition that it is not recorded in the books of account. It is recorded, there is no doubt. Although the amount may be less, but it is recorded and you cannot apply section 69 and 69 capital E. Very valid objection was raised, although not ethical, but as per law, the very valid objection was raised. Now, to counter that, they made the amendment and provided section 69B under the Income Tax Act. Amount of investments, etc., not fully disclosed in books of account. I think heading in itself is very clear to you. Recorded hai, but not at the full price, then the difference may be treated as your unexplained income. Okay ji, chalo yahan tak ho gaya. Coming to another situation. Friends, I am enjoying my life lavishly, making huge expenditures for traveling, for personal expenditure, buying watches, very high cost, television of 8 lakh rupees, 10 lakh rupees, and all sort of things. Department noticed that the Pankaj Sarawgi is enjoying his life lavishly and making expenditure of approximate 1 CR every month. What is the source? They summoned me and asked the source of such expenditure. And I'm obviously not able to explain the source. The department say that you are not able to explain the source and we will treat your that expenditure details with us. That 1 CR every month we will treat it as your income. I humbly asked them, sir, kindly tell me the which particular section you are applying. Without the authority of law, you cannot tax me. They simply say that now we have section 69, 69 capital A, 69B capital B, 68. मैंने कहा जी मेरी बात सुनो. Is that sum credited in my books of account? No, not at all. You cannot apply section 68. Now 69, 69 capital A and 69 capital B are applicable only when investment is found with me or money, bullion, jewelry or other valuable article is found with me. They have find nothing with me. They have just the information that I have made the expenditure. That's all. And by virtue of that expenditure, no valuable article has been created. So I simply said that unless and until it is investment, money, bullion, jewelry or other valuable article, you cannot make it tax. आप इसे tax नहीं कर सकते. डिपार्टमेंट ने कहा बात तो सही कह रहा है, आदमी खतरनाक है, but हम भी कम नहीं. Friends, they made the amendment and provided section 69C, unexplained expenditure. And I think now by heading you must be clear with that. कि अगर आपने कोई खर्चा किया है, if you have incurred any expenditure and regarding that particular expenditure you are not able to explain what is the source of that particular money by which you have made the expenditure, then that particular expenditure amount will be treated as your income. As your income. Is that clear, friends? Section 69C. अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई विद द डिपार्टमेंट. एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के यहां पे रेड हुई. अजय देवगन जी गए एंड नोटिस दैट कि उनके बिजनेस प्रमाइसेस में 500 एम्प्लॉइज आर थे. जब बिजनेसमैन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करी तो पता चला कि वहां पर ओनली 100 एम्प्लॉइज आर रिकॉर्डेड. अब इन 500 एम्प्लॉइज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी या इंक्वायरी करी तो पता चला कि इसमें से 400 एम्प्लॉइज को कैश में सैलरी पे की जाती है. ठीक है जी. बिजनेसमैन से काउंटर किया, कहता जी देता हूं, बिल्कुल देता हूं कैश पे, प्रॉब्लम बताओ. कहते जी ये कैश कहां से आया. बिजनेसमैन ने कहा जी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इट. नाउ डिपार्टमेंट सेज कि अगर आप इसका सोर्स नहीं बताएंगे तो जितने अमाउंट का आपने कैश सैलरी 400 एम्प्लॉइज को पे की है, वी हैव ऑल डाटा विद यू, दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम. मैंने कहा जी विच पर्टिकुलर सेक्शन. फ्रेंड्स, इज दैट एनी काइंड ऑफ सम क्रेडिट इन बुक्स? नो.
Whether section 69A, 69B and section 69 will apply? No, because this is not immutable properties or investment or valuable articles. Whether section 69C can be applied? Yes, this is expenditure, and this is expenditure as part of business, and for which no explanation, proper explanation is provided by the business. तो डिपार्टमेंट ने कहा जी हम तो सेक्शन 69C लगाएंगे और ये इन एम्प्लॉइज को जो भी सैलरी दी है उसे इनकम माने. नाउ बिजनेसमैन मेड अ काउंटर पॉइंट. उसने कहा इज देयर एनी डाउट दैट दिस इज नॉट पेड टू द एम्प्लॉइज. कहते नहीं नहीं, एम्प्लॉइज को दिया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है और आपके यहाँ पे मिले हैं काम करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं. कहते हैं इफ यू आर ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट एज इनकम, नो डाउट, but these are my employees, there is no doubt in that, I have made the payment to them as part of my business, there is no doubt in that, then allow me this 400 employees salary as business expense. फ्रेंड्स, एक तरफ तो उसकी इनकम बढ़ेगी बट बिजनेस एक्सपेंस के कारण इनकम क्या होगी? लेस होगी. उसने कहा कि अलाउ मी एज बिजनेस एक्सपेंस, एंड दैट वाज अ वैलिड पॉइंट. Department has himself said that these are your employees and you are making payment to that, then on that plea I can claim that particular amount as business expense. अब इनकम को बढ़ा भी दोगे और वापस घटा भी दोगे तो नेट इफेक्ट विल बी जीरो एंड देयर विल बी नो टैक्स. डिपार्टमेंट ने कहा आदमी खतरनाक है. देखो क्या लिखा फिर. गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है टू काउंटर दिस काइंड ऑफ सच एक्सप्लेनेशन, सच लॉ लूप होल्स, कि अमेंडमेंट कर दो. देखो क्या लिखा. Provided that notwithstanding anything contained in any other provision of this act, such unexplained expenditure which is deemed to be income of the assessee, ऐसा expenditure जो कि assessee की income माना गया है, shall not be allowed as deduction under any head of income. तो इस expenditure का किसी भी head of income में benefit नहीं मिलेगा. I think that particular objection has been countered. Friends, anything you would like to ask up to these sessions or specifically this particular 5 sections you want to ask? Then I will proceed towards the tax calculations in respect of unexplained incomes. Tax or specifically penalty, क्यों गवर्नमेंट ने 78% टैक्स लगाया, what was the issue? फ्रेंड्स, वो सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे. इफ एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, मोस्ट वेलकम टू आस्क. फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में ये 5 सेक्शंस का ध्यान रखना, and accordingly you have to maintain the document so that you are able to explain each and everything clearly to the department. क्योंकि अगर ये 5 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन अप्लाई हो गया, फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ 30% यू मे नीड टू पे 78%. हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो, या टोटली जेन्युइन एसेसी, जेन्युइन ट्रांजैक्शन, but you are not able to substantiate your transaction because of not proper maintenance of the documentation. तो एक सेपरेट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन टू बी मेंटेन. शायद आई थिंक प्लान फॉर सेशन 9 दैट एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन सी ट्रांजैक्शंस में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने चाहिए. Friends, I think you are getting the aspects that whenever you approach a particular professional for your filing of income tax return, it is not only filing of income tax return. Friends, maximum assessees ka belief kya hai? Filing of income tax return means that punching of the data and uploading on the income tax portal. That is more. That's all. Friends, any government compliance, not only income tax. It's not like ये कागज भरा जमा कराया उसके ऊपर स्टैंपिंग हुआ, that's all. Friends, proper mind is need to be applied. Counter checking must be there. तो when you approach a particular profession, ये सिर्फ ITR फाइलिंग नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स चेक होते हैं. तो उस चीज के पीछे आप प्रोफेशनल हार्डवर्क देखो, प्रोफेशनल नॉलेज का एप्लीकेशन देखो. Friends, there are websites in the market who are providing facility to file income tax return for like 300 rupees per return or 500 rupees per return. Friends, that is what is called data punching. वो डाटा आपसे ही डिमांड करते हैं, पर्टिकुलर फॉर्मेट, वो डाटा पंच होता है, दैट्स ऑल. वो क्लियर कट लिखते हैं कि हम किसी तरीके की कोई भी चीज वाउच नहीं कर रहे. क्लरिकल स्टाफ इज देयर. एंड व्हेन अ पर्टिकुलर assessee approaches a professional
and professional asked, okay ji, for this particular income tax return I want 10,000 rupees of fees. He said that 10,000, by that website I can file my return for rupees 500 or even rupees 1,000. And it's better to go there, but don't come when any kind of notice is issued by the income tax department. Friends, same with the property transactions. No one checks the title at all. कि मैं जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूं, इज दैट हैव ए मार्केटेबल टाइटल, असेसी ने कुछ गलत तो नहीं कर रखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ठीक है रजिस्ट्री हो जानी चाहिए. द पीपल यूज टू अप्रोच द ब्रोकर. वो ब्रोकर होता है, वही कहता है आई विल प्रिपेयर द सेल डीड, आई विल गेट इट रजिस्टर्ड, नो इश्यूज. वो अपना 1% कमीशन लेता है, 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा लेता है, 5,000 में सारा काम कर देता है, ड्राफ्टिंग ईच एंड एवरीथिंग. और आपको एक ठप्पा लग के मिल जाता है रजिस्ट्रार का कि हाँ. फ्रेंड्स, रजिस्ट्री डज नॉट मीन दैट यू गेट द टाइटल एट ऑल. Registry means whatever the title was of seller, that what you have received. If title of seller is defective, your title is also defective. But you are purchasing the rights of the seller and not the property. चले फ्रेंड्स, 78% टैक्स की कहानी के पीछे. आओ डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, 78% टैक्स कहां पे दिया? सेक्शन 115 BBE. अप टू फाइनेंशियल ईयर 15-16. फ्रेंड्स, यहां पर टैक्स रेट था फ्लैट 30%. Friends, this is only for unexplained income, section 68 to 69D. With effect from financial year 16-17. Friends, tax rate यहां पर कर दिया 60% plus surcharge irrespective of income. कितनी भी income हो, flat surcharge लगेगा 25% of 60%. That makes it 15%. 75 plus cess. और as on date देखें तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेस रेट? 4%. 75% का 4%, दैट मेक्स इट 3%. तो एज ऑन डेट टैक्स रेट बिकम्स टू 78%. कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड इन फाइनेंशियल ईयर 16-17? हम मैक्सिमम लोगों के लाइफ टाइम में ये फर्स्ट टाइम हुआ था कुछ फाइनेंशियल ईयर 16-17 में. कैन एनीवन टेल मी फ्रेंड्स? एनीवन एबल टू रिकॉल कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 में समथिंग न्यू which might not have been seen many of us in our lifetime? फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के दायरे में चलो, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कंसेप्ट के दायरे में. Okay, we have received a reply from Ruchika. Income declaration. Okay, Ruchika, that was there that you can disclose your blank income and pay, I think 45% of tax. We will not ask you anything. Okay, उसके बाद क्या हुआ था? Okay, Mr. Ramesh, currency change. Yeah, demonetization. The government discontinued currency notes of 500 and 1,000 and introduced new currency notes of 500 and 2,000. That was one of the way to find out the black money with the people. अब फ्रेंड्स, जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ तो बहुत लोगों ने ह्यूज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक.
ह्यूज कैश वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। हर आदमी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि इन केस द डिपार्टमेंट treats this particular cash as unexplained income, पॉसिबल है? अगर आप उस ह्यूज कैश का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आपके पास इतना कैश कहां से आया था, देन डिपार्टमेंट कैन ट्रीट दैट पर्टिकुलर ह्यूज कैश एज योर अनएक्सप्लेन्ड इनकम, देन हाउ मच टैक्स डिपार्टमेंट कैन लेवी प्लस पेनल्टी। फ्रेंड्स, ये जो यहां पर ये 60% टैक्स किया गया था, दैट वाज अनाउंस्ड on 15th of December 2016 with effect from 1st of April 2016. Retrospective amendment without finance bill. फ्रेंड्स, अलग से रातों रात 2 दिन के नोटिस पे अमेंडमेंट आई थी लॉ में इन द 2 days ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। On 15th of December 2016, income tax law was amended with retrospective effect, and under section 115 BBE, tax rate was increased from 30% to 78%. At that time, cess was 3.3%, so we can say 77.25. ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को रातों रात अमेंडमेंट करनी पड़ी? Friends, whenever the persons were depositing cash in banks, they have only one question in mind, that how much tax and penalty I may need to pay in case department treats this particular cash deposit as my unexplained income. Friends, before 15th of December, अनएक्सप्लेन इनकम माना जाएगा तो टैक्स कितना लगेगा? 30% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अगर टोटल इनकम एक लिमिट से ज्यादा होगी, एंड प्लस सेस, तो अप्रोक्सीमेट 31 और 32% काइंड ऑफ। लोगों ने कहा यार 30-31% टैक्स लगेगा, इट्स ओके, देखी जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, उससे पहले जब वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई थी, आईडीएस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी, तो उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45% टैक्स वाज डिमांडेड। तो जब लोगों ने कहा वहां 45 था, तो ये तो 30% है, तो 30% हम पे कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। क्वेश्चन था व्हाट विल बी हैपन विद द पेनल्टी, क्या पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? फ्रेंड्स, इफ पेनल्टी वुड बी देयर, तो फिर ये अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स के केस में अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट ऑल, फ्रेंड्स, पेनल्टी बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो दूसरा सवाल क्या था कि टैक्स रेट तो चलो हमें क्लियर हो गया, इट इज 30%, क्योंकि उस समय तक अमेंडमेंट नहीं आई थी। व्हाट अबाउट द पेनल्टी? फ्रेंड्स, पेनल्टी का सेक्शन, this is section 115 BB that I have we discussed with you. This is 60% rate return. Penalty for under reporting and misreporting of income, section 270 capital A. फ्रेंड्स, ये असेसिंग ऑफिसर को पावर देता है टू लेवी द पेनल्टी फॉर 2 केसेस, सेक्शन 270 कैपिटल ए। वहां पे पहला केस है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, और दूसरा है मिस रिपोर्टिंग। If it is under reporting, then penalty will be 50% of tax. And if it is misreporting, it is 200% of tax. Now, what is under reporting and misreporting? That is provided part of section 270 capital. I'm not focusing upon that. Now, the question arises, whenever penalty is going to be levied for your underreported or misreported income, how this tax will be calculated? फ्रेंड्स, आप ये टैक्स कैलकुलेट करोगे तभी तो 50 या 200% कैलकुलेट करोगे। How this tax will be calculated? That is the question. No, very simple solution. For example, आपने ITR फाइल करी with income of 8 लाख, असेसमेंट हुआ, आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम निकाली गई, पकड़े में आ गई अनएक्सप्लेन्ड इनकम 4 लाख रुपीस, आपकी इनकम कितनी हो गई? 12 लाख।
Now, very simple way, if I talk about simple way, tax on 12 lakh, जो भी रेट्स एप्लीकेबल है अप्लाई करो, माइनस टैक्स ऑन 8 लाख, जो भी डिफरेंस आएगा इसका 50% या 200% क्या लगेगा, टैक्स। वेरी सिंपल वे, 12 लाख पे टैक्स निकालो, 8 लाख पे जो आपने टैक्स पे किया था वो उसमें से लेस कर दो, डिफरेंस वो टैक्स है जो आपने चोरी करने की कोशिश करी, जो टैक्स चोरी करने की, टैक्स इवेड करने की आपने कोशिश करी, ट्राई किया, ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट आइदर 50% और 200% पेनल्टी विल बी लेफ्ट। अब फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है, दिस इज टैक्स ऑन 8 लाख एंड टैक्स ऑन 12 लाख, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। गवर्नमेंट ने सेक्शन 270 ए में क्या लिखा, ध्यान से देखना। फ्रेंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम विल बी। फ्रेंड्स, अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालनी है, उसी पे तो टैक्स निकालना है। व्हाट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम? इन अ केस वेयर द इनकम हैज बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी सिचुएशन में चल रहे हैं, इफ द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, आपने रिटर्न फर्निश की थी। फ्रेंड्स, यू मस्ट बी नोइंग आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न, दैट रिटर्न इज प्रोसेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड यू रिसीव एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). उसमें कैलकुलेशंस होती है कंपैरेटिव, that the data filed by you, data calculated by the income tax department, difference if any, that is called intimation under section 143(1). If the return has been furnished, the difference between the amount of income assessed and the amount of income determined under clause A of subsection 1 of 143. तो फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली जो आपने रिटर्न में इनकम दिखाई और जो अल्टीमेटली असेसमेंट हुई है, उन दोनों के डिफरेंस के बीच को हम क्या बोलेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम। उसको क्या बोलेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो हमारे केस में रिटर्न फाइल करी 8 लाख रुपीस, असेसमेंट हुई 12 लाख पे, तो 4 लाख इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम। 4 लाख इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम। आओ आगे। फ्रेंड्स, यहां पर लिख दिया सबसेक्शन 7, द पेनल्टी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी सम इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो भी टैक्स पेबल होगा उसका 50%। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू कंप्यूट दैट टैक्स पेबल, that is subsection 10. The tax payable in respect of the under reported income shall be, now how to compute that tax, उसका 50 या 200 निकलेगा। देखो ऊपर वाला देखो, where no return of income has been furnished, हमारी ये केस नहीं है, हमने फर्निश की थी, और where return has been furnished for the first time under section 148, ये हमारा केस भी नहीं है, हमने तो नॉर्मल रिटर्न फाइल की थी, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पे आओ, सी पे, in any other case that means ITR has been filed, determine in accordance with the following formula x minus 5। क्या कहा, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम एज इंक्रीज्ड बाय, अंडर रिपोर्टेड इनकम 4 लाख है, उसमें ऐड कर देना क्या चीज, बाय द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143, यहां तक 8 लाख से, तो x इज इक्वल टू टैक्स ऑन 4 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस रिटर्न इनकम 8 लाख, ये x आ गया। व्हाट इज y, the amount of tax calculated on total income determined under clause A of subsection 1 of 143, y is equal to क्या है, tax on returned income, that is tax on 8 लाख। तो 12 लाख के टैक्स में से 8 लाख का टैक्स लेस कर दो, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड अंडर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब देखो इस सेक्शन में प्रॉब्लम क्या थी ना, फॉर एग्जांपल, ये तो फ्रेंड्स हमने एग्जांपल लिया कि असेसमेंट के समय आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इनकम पकड़ी गई, अनएक्सप्लेन्ड इनकम पकड़ी गई। नाउ फॉर एग्जांपल, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मैं तो भाई साहब जो मर्जी हो जाए टैक्स बचाना है, एथिक्स गए साइड में। मैंने क्या प्लान किया, मैंने बैंक में जमा करवाए 50 लाख रुपए,
जब मैंने आईटीआर फाइल करी तो मेरी अदर इनकम्स थी कितनी? 5 लाख। मैंने अदर सोर्सेज में गया और मैंने 50 लाख रुपए डिक्लेयर कर दिए। मैंने कहा जी मेरी टोटल इनकम आईटीआर में कितनी? 55 लाख। और मैंने इस पे टैक्स पे कर दिया, वट एवर द टैक्स इज देयर। मैं मान के चल रहा हूं उस समय अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे टैक्स रेट 30% था, 78% नहीं था। मैंने फ्रेंड्स इसके ऊपर 30% टैक्स भी दे दिया, मैंने खुद ही कहा अनएक्सप्लेन्ड है। अब मेरा स्क्रूटनी में केस आया एंड द डिपार्टमेंट आस्क्ड, भाई साहब ये 50 लाख रुपए क्या है? मैंने आईटीआर में कुछ लिखा ही नहीं, मैंने लिखा मिसलेनियस इनकम। मैंने कहा जी ये वो जो बैंक में कैश जमा कराया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैश? मैंने कहा जी कुछ नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिप्लाई एट ऑल, आई हैव नो आइडिया, मुझे तो रोड पे पड़े मिले जी। फ्रेंड्स लोगों ने क्या क्या एक्सक्यूज दिए, रोड पे पड़े मिले जी। ओके, आई वाज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड आई फाइंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड वाज अंडर एक्सीडेंट, मैं उसको हॉस्पिटल ले गया एंड देन इन दैट केस दैट देयर पेरेंट्स केम, दे सेड दैट यू हैव सेव्ड लाइफ ऑफ आवर चाइल्ड, वी विल गिव यू रुपीस 50 लाख एज अ टोकन, एज अ काइंड गेस्चर। मैंने बढ़िया बात है भाई साहब, वो पेरेंट्स कौन थे पता नहीं, मैं जब तक दोबारा से गया दे हैव लेफ्ट द हॉस्पिटल, आई गॉट नो आइडिया कौन थे क्या थे, एंड दैट वाज द थिंग, मतलब काइंड ऑफ लेम एक्सक्यूजेस। अब फ्रेंड देयर इज नो डाउट दिस 50 लाख इज अनएक्सप्लेन्ड, 30% टैक्स भी दिया है। अब अगर इस पर्टिकुलर पर्सन पे पेनल्टी नहीं लगे देन व्हाट विल हैपन? Indirectly that person is converting his black money into white by paying only 30%, no penalty। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में आपसे 45% मांगा था और आप आईटीआर में अगर 30% दे देते हो तो काम खत्म। क्यों पेनल्टी नहीं लग पाएगी? क्योंकि सेक्शन 270 कैपिटल ए क्या कहता है कि आपको सबसे पहले जो 50% या 200% आपको कैलकुलेट करना है किसका? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। Now, what was underreported income? Amount assessed less amount in ITR. Friends, can you tell me what will be the amount of your total income after assessment? Assessment के बाद total income कितनी है? ITR में मैंने 55 लाख दिखाई. Can you tell me total income after assessment? Friends, is the department has found any new income? No. कोई नई income नहीं मिली. It is already part of income tax return. Only the nature has been changed that मैंने उसको कहा जी नॉर्मल इनकम है, डिपार्टमेंट ने कह दिया अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, मैंने खुद ही अनएक्सप्लेन्ड कह दिया, इस डिपार्टमेंट इज एबल टू फाइंड आउट एनी न्यू थिंग? नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, एज पर assessment order the total income will be 55 lakh only. अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी आएगी? नील। अब टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या कहा था? x माइनस वाई। वाई क्या था? रिटर्न इनकम 55 लाख। एक्स क्या था फ्रेंड्स? अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस आईटीआर कितना? नील प्लस 55 लाख माइनस 55 लाख इज इक्वल टू नील। अब इसका आप 50 इस पे टैक्स निकालोगे, इस पे टैक्स निकालोगे, क्या आएगा? सेम। मैंने खुद 30% टैक्स दिया था, तो टैक्स ऑन 50 लाख विल बी सेम ऑन दिस पर्टिकुलर टैक्स ऑन 50 लाख। तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आएगा? नील। और नील का आप 50 या 200% निकालोगे तो कितना आएगा? नील। Friends, even I had this particular view even at that stage when section 270 capital A was introduced in Income Tax Act, and I shared this view at the time of the budget proposal in several seminars कि अगर ये नया पेनल्टी का सेक्शन, फ्रेंड्स अभी आऊंगा उस पर, कब इंट्रोड्यूस हुआ, then when was section 270 capital A was introduced as penalty provision in place of the old provision, I shared this view in several seminars कि अगर ये पेनल्टी का प्रोविजन मॉडिफाई नहीं किया गया, that at any point of time
30%, by paying 30% tax, any person can convert his black money into white. And in my view, this penalty provision needs some changes. That the view which was shared by me at that stage only. And friends, later on, when the demonetization was there, friends, this particular view, friends, obviously the many professionals are there who are quite learned and might be having some same view. Friends, this particular view was published in a leading newspaper. This is the possibility and the government must look into. After that publication of view in the leading newspaper, the government got the alert and they made the retrospective change in section 115 BB and levied the tax at that time equivalent to 77.25. They did not change the penalty section, they changed the tax rate. Now, if I'm disclosing a particular amount in income tax return, and maybe paying slab rate or maybe paying flat 30%, and in case department establishes that the amount of income disclosed in your ITR is nothing but unexplained income, they will change the nature of the income. Nature change ho gaya. And as soon as the nature changes, I am have to pay tax at the rate of 77.25. Indirectly वो penalty उस tax में merge हो गई tax rate के. Penalty क्या हो गई? Tax rate में merge हो गई. अब आप कहोगे सर अब यहां पर 55 लाख पे टैक्स निकलेगा 77%. आपने जो आईटीआर फाइल करी उस पर टैक्स पे किया था 30%. तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव. यस फ्रेंड्स, इट इज पॉजिटिव. पर इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. क्या फिर भी पेनल्टी 50 और 200 लगेगी? ये तो डबल हो जाएगा. आप 47% तो एक्स्ट्रा पे करोगे ही करोगे, प्लस ये भी लगेगा. नो फ्रेंड्स, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की गई. देयर वर कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स इन द लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द ब्रेक. ये पॉइंट समझ में आया? पहले मेरे को ये बताओ कि why the amendment was made. There was a problem in section 270 capital A, no doubt, that it is not accounting that particular aspect where the income in is itself disclosed by the assessee in the ITR. अगर ITR खुद ही अनएक्सप्लेन्ड इनकम डिस्क्लोज कर देता और उस पर फ्लैट 30% टैक्स पे कर देता, in that case the department could not have levied any penalty at all by virtue of language of section 270 capital A. फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली 30% में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम चल रही थी, ऐसा समझ लो. Friends, anything you would like to ask in this particular aspect? So let's continue. तो हमने देखा सेक्शन 270 कैपिटल ए में एक प्रॉब्लम थी कि if I voluntarily disclose a particular income in the ITR itself, although it is unexplained, then department was not able to levy the penalty at all on particular such income. So that's why they changed the tax rate from 30% to made it 60% plus surcharge 25% plus cess. अभी सेक्शन 270 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस कब से हुआ था? Friends, that was introduced by Finance Bill, or I will say Finance Act 2016, with effect from 1st April 16. Up to financial year 15-16, friends, the penalty section was section 271, subsection 1, clause number C, which is still applicable as on date for penalty to be levied for incomes of financial year 15-16 or before that. फ्रेंड्स, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं थी. Section 271(1)(c) was drafted in such a manner even that particular situation was also accounted for in section 271(1)(c). Section 271(1)(c) कहता था कि पेनल्टी लगेगी 100% to 300% of tax sought to be evaded. Now, what is tax sought to be evaded? Again, formula we can say x minus y, where x is equal to tax on assessed income. Assessed income means total income after assessment. Total income after
असेसमेंट। हमारे एग्जांपल में इवन आफ्टर असेसमेंट टोटल इनकम इज 55 लाख, टैक्स ऑन 55 लाख ये रहेगा। y इज इक्वल टू टैक्स ऑन असेस्ड इनकम लेस, असेस्ड इनकम में से लेस कर देना क्या चीज, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच either particulars are concealed, ऐसी इनकम जिसके पर्टिकुलर्स आपने कंसील किए, और inaccurate particulars were furnished, inaccurate particulars are furnished, या फिर ऐसी इनकम जिसके आपने पर्टिकुलर्स क्या दिए, गलत दिए। अब जो 55 लाख के अंदर जो 50 लाख की इनकम है फ्रेंड्स, उसके रेस्पेक्ट में मैंने या तो पर्टिकुलर्स कंसील किए हैं या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स दिए हैं, तो वाई कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम कितनी, 55 लाख, उसमें से मैंने कौन सी इनकम के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर्स कंसील किए, 50 लाख के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 50 लाख, तो दैट इज इक्वल टू टैक्स ऑन 5 लाख। क्या यहाँ पे टैक्स सोट टू बी इवेडेड पॉजिटिव आ जाएगा, जब पॉजिटिव आ जाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी 100% टू 300% लेवी करी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अंडर ओल्ड सेक्शन 271(1)(c) दिस सिचुएशन वाज अकाउंटेड फॉर बाय वे ऑफ लैंग्वेज ऑफ द लॉ, but under section 270 capital A that was not accounted for, and on account of that reason friends, tax rate under section 115BB was made 60 plus 25 plus S, as on date that is 78%. अब सवाल यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है अंडर सेक्शन 68 टू 69D, तो क्या उस केस में आज भी पेनल्टी 50% और 200% लेवी होगी? नो फ्रेंड्स। नाउ इन रेस्पेक्ट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स देखो पेनल्टी क्या करी। दिस इज सेक्शन 271(AC). The assessing officer may, notwithstanding anything contained in this act other than the provision of section 271(AB), direct that। assessing officer क्या कह सकता है फ्रेंड्स, पूरे एक्ट को ओवरराइड कर दिया 271(AB) को छोड़ के, वो क्या है थोड़ी देर में देखेंगे। In a case where the income determined includes any income referred to in section 68, 69, 69 capital A, 69B, 69C or 69D for any previous year, the assessee shall pay by way of penalty in addition to the tax payable under section 115BB. Tax तो देना ही पड़ेगा। A sum computed at the rate of 10% of the tax payable. जो टैक्स है उसका 10% क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी। तो टैक्स कितना, 78%, 78% का 10% दैट इज 7.8%। फ्रेंड्स 78 में 7.8 जोड़ोगे दैट मेक्स इट 85.8%। तो अगर आपका असेसिंग ऑफिसर ये पर्टिकुलर अमाउंट इनकम में जोड़ता है बाय वे ऑफ असेसमेंट, देन यू नीड टू पे ओनली 10% पेनल्टी, उस केस में 50% या 200% पे नहीं करनी। नाउ व्हाट दिस प्रोवाइजो सेज, ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर आपने ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम आईटीआर में डिस्क्लोज कर दी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139, तो नो पेनल्टी शैल बी लेविड। इनडायरेक्टली फ्रेंड्स, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम इज देयर, बट इन दैट केस यू हैव टू पे 78% टैक्स। आप 78% टैक्स पे करके आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम्स को डिस्क्लोज कर सकते हो। डिपार्टमेंट कैन नॉट आस्क यू एनीथिंग एट ऑल। तो इनडायरेक्टली इनकम डिक्लेरेशन स्कीम इज स्टिल प्रिवेलिंग, बट यू हैव टू पे 78% टैक्स। और ऐसे केसेस में सेक्शन 270 कैपिटल ए की कोई भी पेनल्टी लेवी नहीं होगी। बट फ्रेंड्स, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर 271(AC) भी नहीं लगेगा, इसका मतलब पेनल्टी 10% नहीं है, कुछ और होगी, एंड दैट सिचुएशन इज कवर्ड अप बाय सेक्शन 271(AB). व्हाट इज दैट सिचुएशन? दिस इज 271(AB).
The assessing officer may, notwithstanding anything contained in any of the provision of this act, direct that in a case where search has been initiated under section 132, अगर रेड हुई है, कब हुई है उस तारीख पे हम नहीं जा रहे, the assessee shall pay by way of penalty in addition to tax, जो भी टैक्स देना है whatever the rate may be, पेनल्टी देनी पड़ेगी कितनी, a sum computed at the rate of 30% of the income, friends income का 30% and not tax का 30% of the specified previous year if the assessee in the course of the search in a statement under subsection 4 of section 32 admits the undisclosing, अगर रेड के दौरान आप अपनी इनकम एडमिट कर लेते हो कि ये मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी 30% लगेगी। और अगर आपने रेड में भी एडमिट नहीं करी बट रेड के कारण आपकी कोई इनकम डिटेक्ट होती है जो कि अनडिस्क्लोज इनकम है, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 60% ऑफ द इनकम। अगर मैं 60% ऑफ द इनकम देखूं, टैक्स कितना है, 78% ऑफ इनकम है, तो इफेक्टिवली यू नीड टू पे 138%, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो रेड के केस में पेनल्टी कितनी लगेगी, 30% और 60% ऑफ इनकम। अदर देन रेड, अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम डिटेक्ट होती है और इनकम में ऐड की जाती है, तो उस पर टैक्स लगेगा 78 प्लस पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ सच टैक्स। तो पेनल्टी के 3 रेट हो गए, 10% ऑफ टैक्स और 30% ऑफ इनकम और 60% ऑफ इनकम। बट 30 या 60 तब अप्लाई होगा जब रेड होगी, बट 10% तब अप्लाई होगा जब रेड वाली केसेस नहीं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। कुछ भी पूछना चाहते हो तो in cases of raid the government is quite strict as compared to non-raid cases, and raid cases friends, even if you are paying 78% tax, you may need to pay 30% or 60% of such income as penalty also. Friends, anything you would like to ask up to this particular stage? Any doubt or query? Friends, if I talk about these sections of unexplained incomes, basically section 69 to 69C are made applicable in case of raid. क्योंकि बिना रेड के कैसे पता चलेगा आपके पास कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी वगैरह है। But section 68 can be applied on the basis of the scrutiny of the checking of your bank statements of your books of accounts. तो प्रैक्टिकली आप देखो तो ज्यादातर सेक्शन 68 पिक्चर में आता है, बाकी सेक्शंस जनरली पिक्चर में नहीं आ पाते। फ्रेंड्स, सेक्शन 68 यू नीड टू प्रूव सेवरल एस्पेक्ट्स टू एस्टैब्लिश कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है। एक तो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये पैसा किससे आया। द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज पैन नंबर और आधार नंबर। दूसरा आता है जेन्युइनिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, इसमें मेनली एस्पेक्ट आता है कि आपके पास पैसा कैसे आया हो, बैंकिंग चैनल से। और जो आपका सोर्स है वहां पर भी कैश डिपॉजिट ना हो। Although friends, it is dependent on the facts of a particular case, there is no benchmark कि हाँ ये मैटर है तो आप एक्सप्लेन मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जनरली अगर बैंकिंग चैनल से पैसा आया और उस लेंडर के बुक्स में भी कैश डिपॉजिट नहीं है बैंक अकाउंट के अंदर, तो ट्रांजैक्शन को जनरली जेन्युइन मान लिया जाता है। एंड थर्ड इज क्रेडिट वर्दिनेस। तो यहां पर आपको क्या देनी है, बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ लेंडर। क्रेडिट वर्दिनेस, अगर आपको कोई 50 लाख रुपीस का लोन दे रहा है, someone is giving loan of rupees 50 lakh, he must have some standing that he can give 50 lakhs. If someone is earning 2 lakh rupees or 3 lakh rupees per annum and there is no source of income and there is no historical capital with him, how a person can give loan of rupees 50 lakh?
That seems to be a doubt regarding the credit worthiness. In that case, what is required to be furnished? Copy of ITR of lender. यहां पर आपका आ जाता है एग्रीमेंट्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है आपने दोस्त से पैसा लिया, कोई एग्रीमेंट नहीं करा, दैट इज आल्सो पॉसिबल. So if you provide such kind of documents which establishes identification of the lender, genuinity of the transaction, and credit worthiness of the lender, in that particular case, your explanation is deemed to be satisfactory, and there could not be additions under section 68. Now the question arises. आपसे क्वेश्चन, आप सोच समझ के जवाब दें. मैंने मिस्टर एक्स से लोन लिया 50 लाख बाय वे ऑफ कैश लिया. नाउ देयर इज असेसमेंट. असेसमेंट के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर ने कहा दिस 50 लाख इज योर अनएक्सप्लेन्ड इनकम अंडर सेक्शन 68 और मैं इस पे टैक्स लेवी करूंगा इन टर्म्स ऑफ 115 बीबी. फिर एओ ने कहा आई विल लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन 26 एंड डबल एस रेड विद सेक्शन 271 कि आपने लोन लिया है 20,000 या उससे ज्यादा बाय वे ऑफ कैश. क्या ये दोनों चीजें अलाउ होनी चाहिए साइमल्टेनियसली? व्हाट डू यू से फ्रेंड्स, व्हाट इज योर व्यू? कि इधर तो असेसिंग ऑफिसर बोले दैट आई विल ट्रीट योर दिस 50 लाख एज योर अनएक्सप्लेन्ड इनकम एंड साइमल्टेनियसली वी से दैट यू हैव टेकन अ लोन बाय वे ऑफ कैश 20,000 or more, I will levy penalty under section 271D 100% of the amount of loan. Should this both assessments or both consequences be allowed to be followed? Okay, Mr. Narendra is saying no. Ramesh ji is also saying no. Yes, friends. Friends, when the department takes a view, that view cannot be changed later on for different aspects. There cannot be two views. On the one side, you are saying that it is your income, and on the other side, you are saying that it is not your income but your loan. Friends, is not that. You have to go by the one view. When you have treated that 50 lakh as your income, how can you say that it is not income but loan? So two consequences cannot follow. If the department believes that this is my unexplained income, in that case, only 115 BB can be applied and only 10% penalty can be levied. And in that case, section 271D cannot be applied at all. Second thing, I took a loan 50 lakh on 8th of November 2021, repaid 50 lakh on 5th of April 2022. उसके बाद एओ क्या करता है? स्क्रूटनी असेसमेंट. पॉसिबल है. And that scrutiny starts on, for example, 29th of June 23, concludes or to be concluded by 31st of March 24. These are the time limits provided by the law. Now the department asked me the explanations in terms of section 68 of this particular 50 lakh. But I am not able to provide proper explanation. I'm not able to provide. Possible? Now the question arises whether this 50 lakh can be treated as income, provided the only fact is that before issue of notice by the income tax department regarding assessment of this 50 lakhs, I have repaid this 50 lakh on 5th of April 2022. सिर्फ इस फैक्ट के बेसिस पे. Friends, my question is that when a particular law is applied,
and by that law it is established that this 50 lakh is my income. Now what do you mean by the word income? Friends, income means the receipt of the money which after the receipt is mine against the whole world. No one can claim from me. Friends, when you talk about earning of income, उसका मतलब ये होता है कि ये पैसा against the whole world मेरा है. No one can demand for me. I can use as per my choice. Now, applying the same principle, when if the department applies section 68 and says this 50 lakh is your income, that should mean that that 50 lakhs must be lying with me against the whole world and no one can demand for me. But before the issue of notice, I have already repaid to the lender. Now, even if this 50 lakh is treated as income, do I left with that particular amount with me? No. Friends, whenever something is established in the law, that must lead to the some logical conclusion. उसका लॉजिकल कंक्लूजन भी आना चाहिए. अगर 50 लाख मेरी इनकम ट्रीट किया जाता है तो वो 50 लाख मेरे पास होने भी तो चाहिए. If I'm not having 50 lakh with me, if treating that in income, that is not that logical conclusion of section 68. Section 68 का मतलब क्या है कि मेरा पैसा ही मेरे पास unexplained के रूप में आया. That is ultimate purpose. But if I have repaid, then how it is possible? So that is a contradiction. Friends, not in respect of section 68, but some for other section, that is section 2 clause 22, there is a judgment of Honorable Supreme Court where they said that if you are applying any particular provision of the law, specifically the deeming provision, which deems, which assumes, that must reach to the logical conclusion. And if that section 68 to 69D are applied and any particular amount is treated as my income, as deemed to be my income, the logical conclusion is that that amount must be with me against the whole world. Although in my knowledge, there is no particular judgment in respect of section 68 in this regard, but I have a strong view that in case I have repaid that particular amount on or before the date of starting of assessment, friends, that money is not lying with me and that cannot be assessed under section 68 at all. Is that clear, friends? Anything you would like to ask up to this particular stage? कुछ भी आप पूछना चाहते हो? Okay, I'm coming to Mr. Sachin to that particular aspect. A very good question he has asked. Friends, Mr. Sachin is asking how much is the responsibility of the lender if it is observed that the genuinity or source of income of the lender is not explained. Lender के हाथ में पैसा कहां से आया? Friends, in that case, various consequences may follow. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा केस चल रहा है तो मेरे केस में इंक्वायरी की जाती है लेंडर से बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 133 ब्रैकेट 6 सबसेक्शन 6. अगर वो उसमें जवाब नहीं देता, ही इज लायबल फॉर पेनल्टीज. दूसरा, मान लो जवाब देता है या नहीं देता है, इफ द सोर्स ऑफ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द लेंडर आर नॉट एक्सप्लेन्ड, then in that case my assessing officer can make reference to the assessing officer of such lender. And in that case, lender's case may be opened for the purpose of assessment. तो लेंडर का केस असेसमेंट के लिए ओपन हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में. दैट इज पॉसिबल. तो अगर लेंडर का केस अगर ओपन हो गया असेसमेंट के लिए, इन दैट केस अगर सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ही मे एंड अप विद पेइंग दैट 78% टैक्स. Is that clear, Mr. Sachin? Can we go further? Okay. चलते फ्रेंड्स, a brief discussion regarding section 54 and 54F. मेन थिंग्स यू नो उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इसमें टैक्स प्लानिंग्स हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. फ्रेंड, दैट इज सेक्शन 54 and 54F.
the bare law which is provided in the law. फिर एक 54 EC है जिसको आप टैक्स प्लानिंग के रूप में यूज कर सकते हो. These all three sections are there. So let's have a brief discussion on the same. Section 54. Individual HUF assessee होने चाहिए. Capital gains on transfer of residential property. कैपिटल गेन्स का नेचर क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स कंसिडरेशन 2 करोड़ माइनस इंडेक्स्ड, फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1.1 CR. आपने मान लो ये ट्रांसफर किया 8th of November 2021. Now what you have to do? You have to purchase new residential property. अगर परचेज कर रहे हो तो 1 + 2 years, दैट मींस 8th of November 2020 से लेके और 8th of November 2023 के बीच में, 1 साल पहले 2 साल बाद में आप परचेज करो या आप कंस्ट्रक्शन करवाओ विद इन नेक्स्ट 3 years, that is between 8th of November 2021 to 8th of November 2024. If you are an assessee individual HUF, you have transferred a residential property on which you are having long-term capital gains, then in that case you have to purchase or construct new residential property within next 2 years or within next 3 years or prior 1 year as the case may be. Then whatever the amount which is invested in new residential house property will be exempt, or simply we can say will be subtracted from 1.1 CR. What does that mean? Friend, that means in the new residential property, you need to invest only the portion of capital gains. When you are selling the property, you have 2 crore rupees in your hands. Friends, historical cost तो आपने कभी history में pay की थी. What is the bank balance with you as on date? 2 crore. But for the purpose of claiming exemption, you need to invest only the portion of the capital gain, not the whole consideration. If you are acquiring a new residential house for rupees 1.1 CR or more than that, in that case, your full capital gains will be exempt. Another condition which you have to take care of, that this new residential house should not be transferred within next 3 years. और इस नए घर को एक्वायर करने के बाद नेक्स्ट 3 years तक ट्रांसफर नहीं करना. That is the only condition. These are the only conditions under section 54. Friends, a question which are that being asked many times, if a person is having 10 residential house property, transfers one and acquires one, is he eligible for exemption under section 54? Yes, he is eligible. Friends, under section 54, it does not matter how many residential properties do you have. If you are transferring the residential property which is long term and you're acquiring the residential property, that is more than enough, irrespective of number of house properties you have. And just you have to invest only the portion of capital gains and not the whole consideration. इसके अलावा पूरे सेक्शन में और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. Now coming to section 54F, individual HUF, क्या कंडीशन है? Long term capital gains on any asset. Any asset includes shares, jewelry, land, commercial property,
कुछ भी except residential house property. If you are having long-term capital gains on any asset except residential house property, now for example, you have transferred the jewelry, shares, whatever, sales consideration 2 CR minus index cost of acquisition 90 lakh, कितना आ गया 1.1 CR. Now, if you purchase residential house property, again 1 plus 2 years, or constructs residential house property within next 3 years, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट के कारण एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा. बट इन दैट केस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन? फ्रेंड्स, ये 1.1 CR 2 CR का कितना परसेंट है? 55%. तो इसका मतलब आपका कैपिटल गेन रेशियो, व्हाट इज योर कैपिटल गेन रेशियो? 55%. तो योर एग्जेम्पशन will be 55% of investment in new residential house property. In other words, if you make investment of rupees 2 crores in new residential house property, 2 crore or more, in that case your whole of the capital gains will be exempted. But if you are making investment of less than 2 CR in the new residential house property, only proportionate capital gains will be exempt. That is the first difference between section 54 and 54F. Under section 54, you need to invest only the portion of capital gains, but under section 54F, you have to invest whole of the sale proceeds and not only capital gains. ये difference clear है? पहले तो ये बताओ friends. दूसरा, on the date of transfer of jewelry, हमने एग्जांपल लिया ज्वेलरी का, assessee do not possess more than one residential house property. If you are having already 2 residential house property and you are making transfer of jewelry, friends, then by making investment in sale proceeds of jewelry in new residential house property, that is the third one, you cannot claim exemption under section 54. Under section 54, there was no such restriction. आपके पास 10 घर हैं, एक घर बेचिए, एक खरीदिए, एग्जेम्पशन मिलेगी. बट अंडर सेक्शन 54F, अगर आपके पास शेयर्स हैं, ज्वेलरी हैं और ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैं या 2 से ज्यादा, तो आप री इन्वेस्टमेंट के कारण एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते. अगली कंडीशन, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नेक्स्ट 3 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं करना. सेम कंडीशन जो सेक्शन 54 में थी, नए घर को अगले 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना. नॉट टू एक्वायर एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और आपको और कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी इन दिस पर्टिकुलर पीरियड. जो अबव आपका 2 इयर्स का या 3 इयर्स का जो पीरियड था, उसमें और कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं करनी. मेरे पास, मैंने जिस दिन ज्वेलरी बेची, आई एम होल्डिंग ओनली 1 प्रॉपर्टी और 0 प्रॉपर्टी. मैंने ज्वेलरी बेच के पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक प्रॉपर्टी में, एग्जेम्पशन क्लेम करी. नाउ इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मेरे को सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, एक से ज्यादा एक्वायर नहीं करनी. अगर मैं एक्सेस में एक्वायर करूंगा तो सेक्शन 54F के एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसका मतलब फ्रेंड्स, सेक्शन 54F इज क्वाइट रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर एज कंपेयर टू सेक्शन 54. यहां तक कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर मैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, फिर एक टेक्निकलिटी पे आऊंगा और एक टैक्स प्लानिंग पे आऊंगा. If anything you would like to ask. I think differences are clear under section 54 and 54F. 54F में फ्रेंड्स रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, एग्जेम्पशन की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्शन 54. I think friends you must be knowing a concept of capital gain account also. जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि मेरे को नई प्रॉपर्टी कब तक एक्वायर करनी है, 8th of November 23 या 8th of November 24 तक.
ट्रांजैक्शन कब करी? 8th of November 21. Now friends, I have to report this capital gain in ITR of financial year 21-22, which is required to be filed by 31st of July 22. बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट का टाइम अवेलेबल है अप टू 8th of November 24. तो आई थिंक यू मस्ट ऑल बी नोइंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक अगर पैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो यू मेक डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट्स की बाय 31st of July 22. और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इस कैपिटल गेन अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके इन्वेस्टमेंट करें. अगर आपने विद इन 3 years इन्वेस्टमेंट कर दिया देन इट इज ओके, परफेक्ट एनफ. आपको जो एग्जेम्पशन मिली थी 21-22 में, दैट इज गुड एनफ. बट अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए बाय 8th of November 24, in that case whatever the unutilized amount is there will become income of this particular financial year, that is financial year 24-25. that means आप 3 साल तक फ्रेंड्स टैक्स पेमेंट डेफर कर सकते हैं. पहला फायदा, आपको अभी नहीं पता whether you will be able to invest or not, but if you want to defer the taxes, do one thing, deposit the amount in capital gain account. In that case tax will be levied after 3 years. ये फायदा समझ में आया फ्रेंड्स? सेम प्रोविजन आपका सेक्शन 54F में है कि यू कैन डिपॉजिट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट और नेक्स्ट 3 years में आप पैसा विड्रॉ करके परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर ले, एंड वी विल कंटिन्यू विद योर एग्जेम्पशन. नहीं यूज किया तो अनयूटिलाइज अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे. एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क फ्रेंड्स? ये पॉइंट समझ में आया कैपिटल गेन अकाउंट? अब देखो हमारे पास एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आया और वहां पर हमने टैक्स प्लानिंग क्या दी. ध्यान से समझना फ्रेंड्स फैक्ट्स को. मिस्टर ए, उन्होंने शेयर्स ट्रांसफर करे एक स्टार्टअप के. स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रखा था. Now, for example, 10th of October 2019, that is part of financial year 19. सेल प्राइस 2 करोड़ रुपए माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए, कैपिटल गेन्स 1.9 CR. Now what he has to do? उसको फ्रेंड्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है. फ्रेंड्स मैं हाईएस्ट टाइम पीरियड लेके चलता हूं 3 साल का, बाय 10th of October 2022. यही करना है. और इस तारीख तक कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी और कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी. ठीक है. उसने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली ऑन लाइक 28th of June 2020. एक्वायर कर ली एंड ही क्लेम्ड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F. ले ली मैंने. अब हुआ क्या, उसने स्टार्टअप के फिर से शेयर्स बेचे अगेन. Now, for example, on 18th of July 2020, in the next year itself, that is financial year 2021, इसने कहा जी मैं एक हाउस प्रॉपर्टी और खरीद लेता हूं. इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं HP1, इसको नाम दे देते हैं HP2. कह जी मैं एक प्रॉपर्टी और खरीद लेता हूं. उसके पास ऑलरेडी कोई नहीं थी. तो जब फर्स्ट एग्जेम्पशन लिया तो उसके पास कितनी हाउस प्रॉपर्टी थी? नील हाउस प्रॉपर्टी. क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगी? यस, सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है. शेयर्स का पैसा है, लॉन्ग टर्म है, आपने प्रॉपर्टी में लगवा दिया विद इन ड्यू टाइम, ऑलरेडी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ऑल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 54F आर फुलफिल्ड. अब 18th जुलाई 2022 को दोबारा से कैपिटल गेन्स अराइज हुए. मान लो फॉर एग्जांपल 1.5 CR माइनस 10 लाख, डिफरेंस 1.4 CR. उसने कहा मैं हाउस प्रॉपर्टी 2 खरीद लेता हूं. क्या सेक्शन 54F की सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है? यस फ्रेंड्स. अगर मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उस इन्वेस्टमेंट की सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है. ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड. मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यस,
सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। तो if he makes investment in house property too, he can claim exemption of 1.4 CR. But in that case, friends, there is a violation of a condition for the earlier investment. जो पहले इन्वेस्टमेंट करी थी इन कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट, उसमें एक वायलेशन हो गया। वहां पर कंडीशन थी कि आप बाय 10th ऑफ अक्टूबर 2022, बाय 10th ऑफ अक्टूबर 2022 आप और कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे। यू कैन नॉट एक्वायर एनी फर्दर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय 10th ऑफ अक्टूबर 2022, नहीं करेंगे। उसने कहा जी मैंने तो प्रॉपर्टी देख रखी, अब क्या करें? मैंने कहा जी सॉरी, दैट यू कैन नॉट डू। नाउ व्हाट इज द टैक्स प्लानिंग वी सजेस्टेड? हमने कहा कि डू वन थिंग। अब यहां से 3 साल आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 18th ऑफ जुलाई 2023। हमने कहा आप कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हो, जरा वो भी बता दो। फ्रेंड्स, उसने कहा कि मैंने देखा है कि बिल्डर एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है, जो अच्छी डेवलप कर रहा है, उसमें मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूं जिसकी मैं आज बुकिंग करवाऊंगा, और बुकिंग करवा के वो पोजेशन देगा कब तक? बाय अप्रैल 2023। हमने कहा जी हो गया काम। कहते हाउ? मैंने कहा जी एक काम करो, लॉ में रेस्ट्रिक्शन क्या है? दैट हाउ यू कैन नॉट एक्वायर हाउस प्रॉपर्टी बाय 10th ऑफ अक्टूबर 2022। तब तक एक्वायर नहीं करनी, उसके बाद तो कर सकता हूं। कर सकता हूं। क्या लॉ मेकर्स ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है, यू कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F फॉर 2 consecutive years? नो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 54F की एग्जेम्पशन हर साल ले सकते हो, प्रोवाइडेड सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हो और पुरानी के लिए कोई वायलेशन ना हो रहा हो। तो हमने कहा डू वन थिंग, यू डिपॉजिट दिस अमाउंट बाय 31st ऑफ जुलाई 21 इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। एक तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दो, दूसरा जब भी पैसा बिल्डर को देना हो तो इसमें से पे करना। कहते जी उससे क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी की बुकिंग तो मैंने आज ही करानी है, दैट इज 20th ऑफ जुलाई 20। मैंने कहा देयर आर सेवरल जजमेंट्स जहां पे कोर्ट्स ने क्या कहा कि अगर आप बिल्डर के पास फ्लैट बुक करवाते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन। उसको क्या माना जाएगा? कंस्ट्रक्शन। तो दैट मींस यू आर गेटिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आपके पास टाइम पीरियड 18th ऑफ जुलाई 23 तक का है, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी अप्रैल 23। क्या सिर्फ बिल्डर के पास फ्लैट बुक कराना कैन बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू एक्वायर? नो, acquisition is completed only when you have received the possession and the property is registered in your name। तो आप कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा करवा के एग्जम्पशन ले लो, पेमेंट बिल्डर्स को आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो, जब तक पोजेशन नहीं मिलेगा तब तक आपने प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करी, और आपको पोजेशन मिलना कब है? अप्रैल 23, दैट इज आफ्टर 10th ऑफ अक्टूबर 22। तो आपने 10th ऑफ अक्टूबर 22 तक प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करी, तो फॉर फर्स्ट एग्जेम्पशन यू आर नॉट मेकिंग एनी वायलेशन ऑफ द लॉ। आप फर्स्ट के एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंटली देखो, डू आई हैव एनी प्रॉपर्टी इन पोजेशन अप टू 10th ऑफ अक्टूबर 22? नो, मेरे पास 10th ऑफ अक्टूबर 22 तक कोई भी प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं है, मैंने कोई वॉलेशन नहीं किया, तो मेरी एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021, क्या मैं सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूं? यस। मैंने नया फ्लैट लिया है, विद इन 3 years लिया है, कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाया, लॉन्ग टर्म है, मेरे पास ऑलरेडी एक ही प्रॉपर्टी है, तो फ्रेंड्स दिस टैक्स प्लानिंग इज पॉसिबल एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू इन दैट कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा। लॉ मेकर्स ने कहा है प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, तो मैंने एक्वायर नहीं करी है, सिर्फ बुकिंग करी है, और दोनों चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Friends, this is the way that the law is to be interpreted and is to be seen। एक एक वर्ड पे फोकस करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट कि हाँ जी व्हाट कुड बी द टैक्स प्लानिंग पॉसिबल, एंड आई डू नॉट थिंक सो दिस इज अ टैक्स अवॉइडेंस एट ऑल।
फ्रेंड्स, ये समझ में आया आपको टैक्स प्लानिंग section 54F? And it may be possible that you might have faced such kind of situation in your life also, कि ऑलरेडी 54F की एग्जाम्पशन ले चुके हो और दोबारा से क्लेम करना चाहते हो, तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, दोबारा से नहीं ले सकते जी। फ्रेंड्स, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। Any doubt or query, friends? Anything you would like to ask? Friends, I've shared you these particular exemption provisions. एक सेक्शन और डाला हुआ है इसमें 54EC that provides कि अगर आपने कोई इमोल प्रॉपर्टी बेची हो, तो विद इन 6 मंथ्स अगर आप कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस, तो उतने रुपए से आपके कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो इफ यू आर सेलिंग इमोल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे आप दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, बॉन्ड्स में पैसा भी लगा सकते हो, और मिक्स ऑफ बोथ। लैंड बेची है तो आप सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकते हो, प्लस 54EC का बेनिफिट भी ले सकते हो। Ramesh is asking query, sir, if A have two residential house property, he sold one and its capital gain used to pay repayment of loan within a year, what will be the year impact? Ramesh ji, the point is that the exemption is not on account of repayment of loan. The exemption is on account of acquisition of the property within the time provided. In other way around, if I talk about section 54 or 54F, there is no requirement of one-to-one correlation. Let me tell you one thing, you have raised a very good query if I talk about of practical life. I sold a residential house property for 2 CR minus index cost of acquisition 90 lakh, long-term capital gain 1.1 CR. I am acquiring another house property, residential house property, for 1.5 CR. मैंने क्या किया, इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेने के लिए लोन ले लिया 1.2 CR का। फ्रेंड्स, लोन जरूरी नहीं है बैंक से लिया हो, मे बी पर्सनल पर्सपेक्टिव व्हाटएवर, और 30 लाख की मैंने क्या कर दी, सेल्फ पेमेंट। इनडायरेक्टली आई एम सेइंग आई हैव नॉट यूटिलाइज दिस अमाउंट, मैंने ये अमाउंट यूटिलाइज ही नहीं किया। एम आई एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन under section 54? Yes. Friends, it is an established fact that under income tax law, for claiming exemption under section 54 or 54F, there is no requirement of one-to-one correlation. The law does not say that you have to use that money only which you have received on account of sale. The condition is that you have to acquire a house property within the provided time. That's all. Whatever the investment is there in the new house property, you will get the exemption. And the best supporting point is that new residential house property can be purchased even prior 1 year. बेचने से पहले खरीदियो तो भी बेनिफिट मिल जाएगा ना। अगर बेचने से पहले खरीदिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा कहां से आया होगा, किसी और सोर्स से आया होगा, किसी और सोर्स से आया होगा। I hope I'm able to give you a very satisfactory reply to your query, Mr. Ramesh. Thanks, Ramesh. Friends, any doubt or query? Sir, some different question, please help if possible at the end. बहुत लंबी क्वेरी है आपकी।
At the end, a partnership firm engaged in the manufacturing of auto parts having turnover 40 CR firm is applicable only for tax audit but not statutory audit. Mostly sale consideration are getting realized in bank ECS form. It is observed that company holds crores of cash in hand in balance sheet. Obviously, source of cash is withdrawal from their own bank current account, but usually this is something not acceptable in current digital era. Question here is so much cash in hand. How income tax authority take if they notice, and any mechanism that IT notice this? Okay, Sachinji, you have a query which is altogether different from the aspects we are discussing. So I humbly request you to make me a call in respect of that. We will discuss over the phone, and you can call me anytime during the working hours, tomorrow or later, as for your comfort. I hope that would be okay instead of discussing this particular aspect here. Rameshji is saying that, but if second house property purchased before more than 1 year, then Rameshji, if the thing is that if the another property is acquired within the time restriction, then earlier section 54 exemption will be withdrawn and you need to pay tax. सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन के लिए आपको एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि इतने टाइम तक असेट एक्वायर करना है, उस टाइम फ्रेम में कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी. अगर आपने दूसरी ले ली तो जो आपने सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन क्लेम की थी वो विड्रॉ हो जाएगी. यू नीड टू पे टैक्स. Okay, friends, for next session, if I talk about on next Saturday and Sunday, okay, quite interesting. Non-resident taxation. Friends, in non-resident taxation, we are going to discuss first of all section 9 and section 195, that is domestic law, that is Indian law. अब जैसे हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में जाएंगे तो हम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को क्या रेफर करेंगे? डोमेस्टिक लॉ. तो वहां पे हम डोमेस्टिक लॉ देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या कहते हैं और उसकी पावर कहां से आई, किस तरीके से आप डीटी डबल ए का बेनिफिट्स ले सकते हैं. उसके अंदर हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कुछ क्लॉजेस भी डिस्कस करेंगे. परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे. टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. But friends, to understand the non-resident taxation, the foundation of non-resident taxation is section 9. तो हमारा मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स अगर देखें ऑफ द फर्स्ट सेशन रिगार्डिंग दिस, वो सेक्शन 9 पे डिवोट होगा. डोंट थिंक दैट कि सर ने एक सेक्शन के ऊपर इतना टाइम लगा दिया, पर फ्रेंड्स दैट इज अ फाउंडेशन स्टोन. अगर आपको सेक्शन 9 समझ में आ गया तो फ्रेंड्स नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन उसके बाद हार्डली 10%. सेक्शन 9 इज 90%. दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 9. अगर आप भी अपना वर्क प्रोफाइल एरिया बनाना चाहते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में, तो यू हैव टू कैच अप ऑन सेक्शन 9. सेक्शन 9 आपको डाई हार्ड पता होना चाहिए अलोंग विद द डिबेट्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेशन ऑन द कमिंग सैटरडे वी विल स्टार्ट विद नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, ब्रीफ बैकग्राउंड. उसके बाद हम सेक्शन 9 को एक एक क्लॉज वाइज डिस्कस करेंगे थ्रू द बेयर लॉ. So bye bye friends, and thanks for the patience listening. Happy Sunday.